Hey guys, this is Manish and you are watching my channel Pharma Bullet। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट की फार्मासिस्ट की एग्जाम अनाउंस्ड है 31 ऑफ जैन को, उसके सिलेबस में भी ये सभी टॉपिक्स कवर्ड है। एपिडेमियोलॉजी, देन इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट, ईडीएल, शेड्यूल्स, देन फार्मेसी एक्ट एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, देन फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, ये सभी टॉपिक्स आपके प्रेजेंट डिपार्टमेंट फार्मासिस्ट की सिलेबस में इंक्लूड है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड इस एग्जाम के लिए अभी बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है, तो पीडीएफ बुक से आप आपका रिमेनिंग सिलेबस कवर करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट WHO EDL was published in, the first WHO essential drugs list was published in 1977, 1955, 1990, 1985। तो कब पब्लिश हुई थी फर्स्ट इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट? तो फर्स्ट इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट पब्लिश हुई थी इन 1977। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट फॉर चिल्ड्रन वाज पब्लिश्ड इन 2007। First essential drug list was published in 1977 and first essential drug list for children was published in 2007। अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज इसेंशियल ड्रग्स। इसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं? तो इसेंशियल ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट सैटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। एज पर WHO, ड्रग्स दैट सैटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन आर इसेंशियल ड्रग्स, ठीक है। ये डेफिनेशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first EDL contains dash medicines and vaccines 550, 320, 260, 220। The first essential drug list contains dash medicines and vaccines। तो फर्स्ट EDL में थे 220 medicines and vaccines। ऑप्शन डी will be your correct answer। एंड अभी जो EDL अपडेट हुई है इन 2022 उसमें है 384 ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, examples of situations where specialist control of drug use is necessary are। examples of situations where specialist control of drug use is necessary: the use of reserve antimicrobials for multi-drug resistant bacteria, the use of anti-neoplastic, immunosuppressive and antiretroviral drugs, establishing adequate regimens for treatment of tuberculosis and leprosy, all of the above। Examples of situations where specialist control of drug use is necessary। तो specialist control of drug use is necessary in all of these situations। Option A, B, C, all of the above। Option D will be your correct answer। Next question, selection criteria for essential drugs list। तो इनमें से क्या है EDL का सिलेक्शन क्राइटेरिया? डिजीज प्रीवैलेंस, एविडेंस ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑल ऑफ दीज। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर EDL। तो EDL का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है डिजीज प्रीवैलेंस, एविडेंस ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस इज इंडिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी रिव्यूज, WHO clinical guidelines, both A and B, none of the above। Therapeutic equivalence is indicated on the basis of, तो therapeutic equivalence is indicated on the basis of safety and efficacy reviews and WHO clinical guidelines। So option C हो जाएगा आपका correct answer, both A and B। Next question, factors affecting EDL selection criteria except pattern of prevalent diseases, political and social factors, the treatment facilities, the training and experience of the available personnel। Factors affecting EDL selection criteria except, तो political and social factors do not affect EDL selection criteria। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, political and social factors। बाकी के ये पैटर्न ऑफ प्रीवेलेंट डिसीजेस, द ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एंड द ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द अवेलेबल पर्सनल, ये सभी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं EDL सिलेक्शन क्राइटेरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज प्राइमरीली इंटेंडेड टू इंडिकेट सिमिलर क्लिनिकल परफॉर्मेंस विद इन ए फार्माकोलॉजिकल क्लास। राउंड सर्कल सिंबल, स्क्वायर बॉक्स सिंबल, ट्रायंगल सिंबल, रेक्टेंगल सिंबल। Dash is primarily intended to indicate similar clinical performance within a pharmacological class।
तो ये होता है स्क्वायर बॉक्स सिंबल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्क्वायर बॉक्स सिंबल इंडिकेट करता है सिमिलर क्लिनिकल परफॉर्मेंस विद इन ए फार्माकोलॉजिकल क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। EDL is revised every dash years by WHO expert committee. 3 years, 2 years, 5 years or 1 year. Essential drugs list is revised every dash years by WHO expert committee. So EDL is revised every 2 years. Option B will be your correct answer. EDL is revised every 2 years by WHO expert committee. Next question. Benefits of essential drugs list are increased availability of drug to the hardest population residing the rural areas, ease in problems encountered in drug prescribing, ease in dispensing and enhance patient compliance, all of the above. तो क्या होते हैं EDL के बेनिफिट्स? तो ये सभी होते हैं EDL के बेनिफिट्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। Increased availability of drug to the hardest population residing the rural areas, then ease in problems encountered in drug prescribing and ease in dispensing and enhance patient compliance. ये सभी होते हैं benefits of EDL, essential drugs list. Next question. In the model list of essential medicines, the classification of drugs has been based on therapeutic indication, company name, alphabetical order, pharmacological effect. In the model list of essential medicines, the classification of drugs has been based on. तो इनमें से किस पे बेस्ड होता है the classification of drugs in the model list of essential medicines? तो classification of drugs has been based on therapeutic indication. Option A will be your correct answer. Therapeutic indication. Next question. If the pharmaceutical dosage form is the criteria for selecting drugs, then the following guidelines should be considered. Stability of the dosage form under the storage conditions prevalent in the area, PK profile and extent of bioavailability, the dosage form which has appreciable utility and widely available should be selected, all of the above. If pharmaceutical dosage form is the criteria for selecting drugs, then the following guidelines should be considered. And the correct answer of this question is option D, all of the above. If pharmaceutical dosage form is the criteria for selecting drugs, then stability of the dosage form under the storage conditions prevalent in the area, then PK profile and extent of bioavailability, and the dosage form which has appreciable utility and widely available should be selected. These all guidelines should be considered. Option D हो जाएगा आपका correct answer. Next question. Dash is a crucial element in any essential drug program. Therapeutic drug monitoring, marketing analysis, quality assurance, continuing medical education. Dash is a crucial element in any essential drug program. तो इनमें से कौन सा होता है crucial element in any essential drug program? तो ये होता है quality assurance. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Quality assurance is the crucial element in any essential drug program. Next question. Dash shall be launched to enhance understanding and acceptance of the essential drugs concept by the patient and healthcare personnel. Marketing surveillance, comprehensive public information, documentation, none of these. Dash shall be launched to enhance understanding and acceptance of the essential drugs concept by the patient and healthcare personnel. तो ये होता है comprehensive public information. Option B will be your correct answer. Comprehensive public information shall be launched to enhance understanding and acceptance of the essential drugs concept by the patient and healthcare personnel. ठीक है, next question. Revisions are made in EDL to update the existing information due to constant change in medical needs of population, availability of newer medicines, both A and B, none of these. Revisions are made in essential drugs list 2. तो किस लिए कहते हैं रिविजन्स इन EDL? तो रिविजन्स आर मेड इन EDL टू अपडेट द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन ड्यू टू कांस्टेंट चेंज इन मेडिकल नीड्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूअर मेडिसिन्स. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, बोथ A and B. नेक्स्ट क्वेश्चन. In case where two drugs bear close resemblance with respect to efficacy, stability, bioavailability, then dash drug will be selected. In case where two drugs bear close resemblance with respect to efficacy, stability and bioavailability, then dash drug will be selected. Drug having more appealing pharmacokinetics, drug which has undergone investigation,
Drug which can prepared in appreciable quantity and quality at an affordable cost, all of the above. In case where two drugs bear close resemblance with respect to efficacy, stability and bioavailability, then dash drug will be selected. तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. इन सभी ड्रग को सिलेक्ट किया जाता है इन केस वेयर टू ड्रग्स बेयर क्लोज रिजेम्बलेंस विथ रिस्पेक्ट टू एफिकेसी, स्टेबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The model list of essential medicines comprises of dash classes in alphabetic order 20, 42, 16, 27. The model list of essential medicines comprises of dash classes in alphabetical order. तो ये होता है 27 classes in alphabetic order. Option D will be your correct answer. 27. The model list of essential medicines comprises of 27 classes in alphabetic order. ठीक है. Next question. GMP comes under Schedule H, Schedule M, Schedule R, Schedule S. GMP comes under. तो शेड्यूल्स में हमने डिस्कस किया था GMP comes under Schedule M. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. GMP के लिए होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होता है शेड्यूल M. देन ये शेड्यूल H होता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए. शेड्यूल R होता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए. एंड शेड्यूल S में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स. ठीक है. शेड्यूल M होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए. रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल M. नेक्स्ट क्वेश्चन. QMS stands for Quality Manufacturing System, Quality Management System, Quality Marketing System, Quality Manufacturing Services. तो क्या होता है QMS? तो QMS होता है Quality Management System. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. QMS stands for Quality Management System. Next question. GMP comes under which title? 21 CFR, 25 CFR, 26 CFR, 35 CFR. ये CFR होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस. बहुत बार एग्जाम में CFR का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है. CFR होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस. एंड GMP comes under 21 CFR. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. GMP comes under 21 Code of Federal Regulations. Next question. Schedule M having the details about quality control, quality assurance, production, all of the above. Schedule M having the details about. तो Schedule M having the details about quality control, quality assurance and production also. Option D हो जाएगा आपका correct answer. All of the above. Next question. Which section of 21 CFR contained CGMP in manufacturing, processing, packing or holding of drug? Part 211, Part 210, Part 300, Part 310. ये CGMP होता है Current Good Manufacturing Practice. Which section of 21 CFR contain the current good manufacturing practice in manufacturing, processing, packing or holding of drug? तो ये होता है Part 210. Option B will be your correct answer. Next question. Which department should evaluate all aspect of the received material? QA, QC, R&D, production. Which department should evaluate all aspect of the received material? तो quality assurance department should evaluate all aspect of the received material. Option A will be your correct answer. QA होता है quality assurance. Next question. All biomedical waste shall be destroyed as per the provisions of biomedical waste rules dash. 1998, 1992, 1996, 1993. तो बायोमेडिकल वेस्ट रूल बने थे 1996 में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड ऑल बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी डिस्ट्रॉयड एज पर द प्रोविजंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1996. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी इन CGMP? करंट, करेंसी, चेकिंग और कवरेज. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया CGMP होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड C स्टैंड्स फॉर करंट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. द मीनिंग ऑफ C इन CGMP इज करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड डॉक्यूमेंटेशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, बोथ A and B, none of the above. Good documentation is an essential part of. तो गुड डॉक्यूमेंटेशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. गुड डॉक्यूमेंटेशन होता है इसेंशियल पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन.
On the basis of 21 CFR CGMP for finished product, Part 210, Part 211, Part 300, Part 310. On the basis of 21 Code of Federal Regulation, current good manufacturing practice for finished product. तो ये होता है पार्ट 211, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए होता है पार्ट 211। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोकन और रिटन डॉक्यूमेंट इज ऑब्जर्व्ड, हर्ड और इन्वेस्टिगेटेड इज कॉल्ड एज एसओपी, रिपोर्ट, प्रोटोकॉल, नन ऑफ द अबव। स्पोकन और रिटन डॉक्यूमेंट इज ऑब्जर्व्ड, हर्ड और इन्वेस्टिगेटेड इज कॉल्ड एज, तो इसे बोला जाता है रिपोर्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रिपोर्ट होता है स्पोकन और रिटन डॉक्यूमेंट, ऑब्जर्व्ड, हर्ड और इन्वेस्टिगेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट डैश, क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी, नन ऑफ द अबव। कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट डैश, तो किसे इंडिकेट करता है कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट? तो कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट होता है इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल डिटेल्स अबाउट हैंडलिंग प्रोडक्ट कंप्लेंट्स इन कंपनी अवेलेबल बाय एसओपी, इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट, R&D। द फुल डिटेल्स अबाउट हैंडलिंग प्रोडक्ट कंप्लेंट्स इन कंपनी अवेलेबल बाय, तो फुल डिटेल्स अबाउट हैंडलिंग प्रोडक्ट कंप्लेंट्स इन कंपनी अवेलेबल होता है बाय एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड फुल डिटेल्स अबाउट हैंडलिंग प्रोडक्ट कंप्लेंट्स इन कंपनी अवेलेबल बाय एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑपरेशन विच टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट? लेबलिंग, पैकेजिंग, मास्टर फॉर्मूला, डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑपरेशंस विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है मास्टर फॉर्मूला। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीएमपी इज पार्ट ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग। द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज पार्ट ऑफ द, तो जीएमपी इज द पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, areas for housing animals shall be isolated and maintained as prescribed in the rule dash of drug and cosmetic rules 1945, 140C2, 143C1, 112C2, 150C3। तो इनमें से किसमें प्रिस्क्राइब्ड होता है एरिया फॉर हाउसिंग एनिमल्स? तो ये प्रिस्क्राइब्ड होता है 150C3 में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग एंड कॉस्मेटिक के 150C3 में प्रिस्क्राइब किया गया है एरियाज फॉर हाउसिंग एनिमल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सनल हैंडलिंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स शैल बी टेस्टेड फॉर डैश सेंसिटिविटी बिफोर एम्प्लॉयमेंट, एम्पिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, पेनिसिलिन। द पर्सनल हैंडलिंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स शैल बी टेस्टेड फॉर डैश सेंसिटिविटी बिफोर एम्प्लॉयमेंट, तो ये होता है पेनिसिलिन सेंसिटिविटी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। The personnel handling beta-lactam antibiotics shall be tested for penicillin sensitivity before employment. Next question. Separate manufacturing facilities shall be provided for the manufacturing of contamination causing and potent products such as barbiturates, beta-lactams, penicillins, cephalosporins. तो इनमें से किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज? तो सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड फॉर बीटा लैक्टम्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेमिनेशन कॉजिंग एंड पोटेंट प्रोडक्ट्स सच एज बीटा लैक्टम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड इज ए बैच, प्रोडक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, तो ये होता है बैच एंड प्रोडक्ट ऑल्सो। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड इज ए बैच एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डैश एरियाज, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फिलिंग। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डैश एरियाज, तो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज इंडिपेंडेंट होने चाहिए प्रोडक्शन एरियाज से। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ IQ इज टू चेक द
डिजाइन, इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस, फैसिलिटीज। द पर्पज ऑफ IQ, ये IQ होता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, एंड द पर्पज ऑफ IQ इज टू चेक द इंस्टॉलेशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, caution new drug limited by federal law to investigational use is labeled by NDA, IND, ANDA, FDA. Caution new drug limited by federal law to investigational use is labeled by, तो it is labeled by IND. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। IND होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है IND। ये NDA होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, देन ANDA होता है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एंड FDA होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सभी फुल फॉर्म्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NDA होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ANDA होता है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एंड IND होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द QMS रिव्यू? पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द QMS रिव्यू? ये QMS होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड व्हाट इज द QMS रिव्यू? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। QMS रिव्यू पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, QMS इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, prospective validation is performed on at least dash successive production sizes 5, 2, 3 और 7। तो prospective validation परफॉर्म किया जाता है on at least 3 successive production sizes। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, at least 3 successive production sizes। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, personnel should not move between areas producing dash products, same, mix, different, opposite। personnel should not move between areas producing dash products, तो ये हो जाएगा डिफरेंट प्रोडक्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। personnel should not move between areas producing different products। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the transmission of pathogens during pregnancy from mother to child is called vertical transmission, direct transmission, indirect transmission, horizontal transmission। the transmission of pathogens during pregnancy from mother to child, तो ये होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टडी? क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इकोलॉजिकल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, कोहर्ट स्टडी। क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टडी? तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टडी होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवैलेंस इज ए रेट, रेशियो, प्रपोर्शन और मीन। तो क्या होता है प्रीवैलेंस? तो प्रीवैलेंस होता है प्रपोर्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये प्रीवैलेंस होता है परसेंटेज वैल्यू, एंड परसेंटेज वैल्यू होता है प्रपोर्शन। ये होता है करंट केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इंसिडेंस इज कैलकुलेटेड? केस कंट्रोल स्टडी, prospective study, retrospective study, cross sectional study। in which of the following study incidence is calculated? तो incidence is calculated in prospective study। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following immunoglobulin is produced early in the primary response to infection? IgE, IgM, IgG, IgA। immunoglobulin is produced early in the primary response to infection, तो ये होता है IgM। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। IgM is produced early in the primary response to infection। नेक्स्ट क्वेश्चन, the concept which views health as absence from disease is called psychological aspect, holistic concept, ecological concept, biomedical concept। the concept which views health as absence from disease, तो ये होती है बायोमेडिकल कंसेप्ट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन बायोमेडिकल कंसेप्ट हेल्थ इज एब्सेंस फ्रॉम डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नन ऑफ दीज। इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, तो ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम। Next question, the first schedule to the Drugs and Cosmetics Act 1940 prescribes
Standards for disinfectant fluid, standards for clinical trial, authoritative books of Ayurvedic, Siddha and Unani medicines, standards for the pack sizes of the drug. The first schedule to the Drugs and Cosmetic Act 1940 prescribes. तो क्या होता है फर्स्ट शेड्यूल में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के? तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में आता है ऑथोरिटेटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेम्स ऑफ बुक्स अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम कम्स अंडर फर्स्ट शेड्यूल. स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आता है शेड्यूल ओ में. स्टैंडर्ड्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल के लिए होता है शेड्यूल वाई एंड पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल P1. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स लाइसेंस इज इशूड इन फॉर्म नंबर 28, 28A, 28E, 28C. फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स लाइसेंस इज इशूड इन फॉर्म नंबर. तो कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स? तो ब्लड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है फॉर्म नंबर 28E. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ब्लड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है फॉर्म नंबर 28E एंड ब्लड बैंक के लिए होता है फॉर्म नंबर 28C. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विटामिन प्रिपरेशंस बिलोंग टू शेड्यूल C1, C, G और D. तो कौन से शेड्यूल में आते हैं विटामिन प्रिपरेशंस? तो ये आते हैं शेड्यूल C1 में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. विटामिन प्रिपरेशंस बिलोंग टू शेड्यूल C1. ये शेड्यूल C एंड C1 होते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए. इनमें से ये C1 होता है फॉर नॉन पेरेंटल प्रिपरेशंस एंड C होता है फॉर पेरेंटल प्रिपरेशंस. शेड्यूल C में आते हैं सेरा, वैक्सीन्स, देन टॉक्सोइड्स, एंटीजेंस, इंसुलिन्स, ये सभी आते हैं शेड्यूल C में. देन ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली के लिए होता है शेड्यूल G. शेड्यूल G में आते हैं ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In an epidemiological study, the first case that comes to the attention of the investigator is called reference case, secondary case, index case, primary case. In an epidemiological study, the first case that comes to the attention of the investigator. तो फर्स्ट केस को बोला जाता है इंडेक्स केस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. इंडेक्स केस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Endemic disease means that a disease exhibits seasonal pattern, is constantly present in a given population group, is prevalent among animals, occurs clearly in excess of normal expectancy. तो क्या होता है endemic disease? तो endemic disease होता है disease which is constantly present in a given population group. Option B will be your correct answer. Disease which is constantly present in a given population group होता है endemic disease. Next question. Antibodies disappears very quickly in which immunity? Active immunity, passive immunity, natural induced immunity, autoimmune response. Antibodies disappears very quickly in which immunity? कौन से इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज डिसअपियर्स हो जाते हैं वेरी क्विकली? तो ये होती है पैसिव इम्यूनिटी. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इन पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज डिसअपियर्स वेरी क्विकली. नेक्स्ट क्वेश्चन. As per Schedule M, the permitted limit of solid content in water for injection is 1 mg per 100 ml, 1 gram per 100 ml, 10 mg per 100 ml, 10 gram per 100 ml. As per GMP, कितना होता है permitted limit of solid content in water for injection? तो ये होता है 1 mg per 100 ml. ऑप्शन ए will be your correct answer. 1 mg per 100 ml होता है permitted limit of solid content in water for injection. Next question. Genetic factors, age, gender, socio-economic status are also known as risk determinants, risk factors, risk management, risk markers. तो क्या बोलते हैं इन्हें? जेनेटिक फैक्टर्स, एज, जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. तो ये होते हैं रिस्क डिटर्मिनेंट्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. DTAB has dash ex officio members. Drug Technical Advisory Board has dash ex officio members. 6, 7, 10 और 8. कितने ex officio members प्रेजेंट होते हैं इन DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड? तो DTAB में टोटल मेंबर्स होते हैं 18. इसमें 5 होते हैं नॉमिनेटेड, 5 होते हैं इलेक्टेड, 8 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. DTAB में 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं एंड 5 होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स. ये टोटल होते हैं 18 मेंबर्स. देन DTAB इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट
एंड DTAB इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 years। एंड इसका चेयरमैन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होता है चेयरमैन ऑफ DTAB। एंड DTAB का फंक्शन होता है एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीन्स वेर फर्स्ट ऑथोराइज्ड फॉर द COVID-19? लाइव एटेन्यूएटेड, टॉक्सोइड वैक्सीन, mRNA वैक्सीन, conjugated वैक्सीन। वैक्सीन्स वेर फर्स्ट ऑथोराइज्ड फॉर द COVID-19। तो COVID-19 के लिए फर्स्ट ऑथोराइज्ड टाइप ऑफ वैक्सीन था mRNA वैक्सीन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, mRNA वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 2, शेड्यूल 1, शेड्यूल Y और शेड्यूल R। स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, तो ये प्रिस्क्राइब किया गया है शेड्यूल 2 में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल 2 में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड शेड्यूल 1 में है ऑथोरिटेटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। इसमें आते हैं नेम्स ऑफ बुक्स अंडर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। देन शेड्यूल Y होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। शेड्यूल R में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which form number is required to issue duplicate license for the wholesale? Form 20C, Form 20D, Form 21C, Form 36। Form number is required to issue duplicate license for wholesale। तो कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर होलसेल? तो होलसेल के डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए होता है फॉर्म नंबर 20D। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर होलसेल के लिए होता है 20D एंड डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर रिटेल के लिए होता है 20C। ये 20C होता है फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर रिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल ह्यूमन ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस। होल ह्यूमन ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर, तो कितना होता है स्टोरेज कंडीशन फॉर होल ह्यूमन ब्लड? तो ये होता है 6 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राइड प्लाज्मा का स्टोरेज कंडीशन। तो ड्राइड प्लाज्मा शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। ड्राइड प्लाज्मा शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस एंड होल ह्यूमन ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवाइजरी बॉडी इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स इज ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, ड्रग इंस्पेक्टर, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो इनमें से कौन सी होती है एडवाइजरी बॉडी इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स? तो ये होती है ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। DCC होती है एडवाइजरी बॉडी इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पूरियस ड्रग्स कम अंडर द सेक्शन 17B, 17A, 17 और 20। कौन से सेक्शन में आते हैं स्पूरियस ड्रग्स? तो स्पूरियस ड्रग्स के लिए होता है 17B। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 17B होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस ड्रग्स। ये 17A होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। एडल्ट्रेटेड ड्रग्स कम्स अंडर सेक्शन 17A एंड ये 17 होता है मिस ब्रांडेड ड्रग्स के लिए। मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग्स के लिए होता है 17 सेक्शन। देन एडल्ट्रेटेड ड्रग के लिए होता है 17A एंड स्पूरियस ड्रग्स के लिए होता है 17B। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिटेड प्लेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय रेल इज कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, फिरोजपुर। परमिटेड प्लेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय रेल, तो ये है फिरोजपुर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिरोजपुर है परमिटेड प्लेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय रेल। देन विच इज द परमिटेड प्लेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय एयर एंड सी? तो परमिटेड प्लेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय एयर एंड सी आर मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। देन परमिटेड प्लेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय रोड है नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेल्थ प्रमोशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, application made in form dash for small quantity of drugs for personal use 12A, 12B, 25A, 25B. Application made in form number dash
फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज। कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन किया जाता है फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज? तो इसके लिए होता है फॉर्म नंबर 12A। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 12A में एप्लीकेशन किया जाता है फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज। एप्लीकेशन मेड इन फॉर्म नंबर 12A एंड लाइसेंस ग्रांटेड इन फॉर्म 12B। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज सैकेट, डी विंसी, हिपोक्रेट्स, टोल्स्टॉय। फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, तो फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज सैकेट। फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है डेविड सैकेट एंड फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजी इज मोस्ट फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? कम्युनिकेबल डिसीज, क्रोनिक डिसीज, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, मेंटल हेल्थ कंडीशंस। एपिडेमियोलॉजी इज मोस्ट फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये हो जाएगा हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Epidemiology is mostly focused on health related events. Next question, epidemiology is concerned with the study of distribution of health events, frequency of health events, determinants of health events, all of the above. Epidemiology is concerned with the study of, तो क्या होता है epidemiology? तो epidemiology होता है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इवेंट्स, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ इवेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इवेंट्स ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज द प्रपोर्शन इन एपिडेमियोलॉजी? प्रीवैलेंस, केस फैटेलिटी रेट, proportionate mortality rate, incidence rate. Not regarded as the proportion in epidemiology. तो इंसिडेंस रेट इज नॉट रिगार्डेड एज द प्रपोर्शन इन एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट मेजर ऑफ कैलकुलेशन इन एटियोलॉजिकल स्टडीज? इंसिडेंस रेट, प्रीवैलेंस रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, ऑल ऑफ द अबव। बेस्ट मेजर ऑफ कैलकुलेशन इन एटियोलॉजिकल स्टडीज, तो ये होता है इंसिडेंस रेट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसिडेंस रेट होता है बेस्ट मेजर ऑफ कैलकुलेशन इन एटियोलॉजिकल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the sudden increase in occurrence of disease in a particular time and place? Outbreak, pandemic, contamination, epizootic. Sudden increase in occurrence of disease in a particular time and place. तो डिसीज का सडन इंक्रीज इन पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस होता है आउटब्रेक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आउटब्रेक होता है सडन इंक्रीज इन ऑकरेंस ऑफ डिसीज इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, epidemiological tools comprises of which of the following? Rate and ratio, rate and proportion, rate, ratio and proportion, none of the above. Epidemiological tools comprises of which of the following? तो इनमें से क्या आता है epidemiological tools में? तो epidemiological tools में आता है rate, ratio and proportion. Option C will be your correct answer. Epidemiological tools comprises of rate, ratio and proportion. Next question, most important health status indicator of a country? Life expectancy at birth, maternal mortality rate, total infertility rate, none of the above. Most important health status indicator of a country, तो most important health status indicator of a country होता है life expectancy at birth. Option A will be your correct answer. Life expectancy at birth is the most important health status indicator. Next question, prevalence is concerned with which of the following? Total number of cases of disease, old cases of disease, new cases of disease, all of the above. Prevalence is concerned with which of the following? तो prevalence में आता है new cases of disease, old cases of disease and total number of cases of disease. Option D हो जाएगा आपका correct answer, all of the above. Prevalence is concerned with total number of cases of disease, old cases of disease and new cases of disease. Next question, which of the following is the study of the distribution of disease in population? Hematology, epidemiology, rheumatology, ecology. Study of distribution of disease in population, तो ये होता है epidemiology. Option B will be your correct answer. Epidemiology is the study of distribution of disease in population. Next question, which of the following is regarded as ratio in epidemiology? Sex ratio, relative risk, age specific fertility rate, both A and B. Regarded as ratio in epidemiology, तो ratio in epidemiology होता है sex ratio and relative risk. Option D will be your correct answer, both A and B. Next question,
Which of the following term is used for disease found among a group of people with low morbidity? पैंडेमिक, सिनर्जिस्टिक, इंडेमिक, जूनोटिक। इनमें से कौन सी टर्म का यूज किया जाता है फॉर डिसीज फाउंड अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ लो मॉर्बिडिटी? तो ये होता है इंडेमिक। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंडेमिक टर्म का यूज करते हैं फॉर द डिसीज फाउंड अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ लो मॉर्बिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a mortality indicator? Notification rate, life expectancy, new cases, disease frequency। इनमें से कौन सा है mortality indicator? तो mortality indicator होता है life expectancy। ऑप्शन बी will be a correct answer। Life expectancy is a mortality indicator। Next question. What is the best measure for the calculation of burden of disease in community? Incidence rate, prevalence rate, proportionate mortality rate, case fatality rate। बेस्ट मेजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बर्डन ऑफ डिसीज इन कम्युनिटी, तो ये होता है प्रोपोर्शनेट मॉर्टेलिटी रेट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोपोर्शनेट मॉर्टेलिटी रेट होता है बेस्ट मेजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बर्डन ऑफ डिसीज इन ए कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ओवर ए लार्ज एरिया सच एज इंटायर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स? पैंडेमिक, इंडेमिक, एक्सोटिक, स्पोरेडिक। occurs over a large area such as entire countries or continents। तो इसे बोलते हैं पैंडेमिक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पैंडेमिक occurs over a large area such as entire countries or continents। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसिडेंस रेट इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? न्यू केसेस ऑफ डिसीज, ओल्ड केसेस ऑफ डिसीज, टोटल नंबर ऑफ डिसीज केस, नन ऑफ द अबव। इंसिडेंस रेट इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इंसिडेंस रेट होता है न्यू केसेस ऑफ डिसीज। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसिडेंस रेट इज कंसर्न विथ न्यू केसेस ऑफ डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसिडेंस रेट रेफर्स टू ओनली न्यू केसेस, ओनली ओल्ड केसेस, बोथ ओल्ड एंड न्यू केसेस, नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा इंसिडेंस रेट होता है ओनली न्यू केसेस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसिडेंस रेट रेफर्स टू ओनली न्यू केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true? Incidence is a rate but prevalence is a ratio. Incidence is a rate but prevalence is proportion. Both incidence and prevalence are rate. Incidence is proportion but prevalence is rate। इनमें से कौन सा सेंटेंस है ट्रू? Which of the following statement is true? तो हमने देखा prevalence होता है proportion and incidence is a rate। ऑप्शन बी will be your correct answer। Incidence is a rate but prevalence is a proportion। Next question. The epidemiology triad of disease causation refers to time, place, person, agent, host, environment, source, mode of transmission, susceptible host, none of the above। The epidemiology triad of disease causation refers to, तो ये होता है agent, host and environment। ऑप्शन बी will be your correct answer। Next question. The study which proceed from cause to effect is known as? The study which proceed from cause to effect, केस कंट्रोल स्टडी, कोहर्ट स्टडी, इकोलॉजिकल स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, तो कॉज टू इफेक्ट होता है कोहर्ट स्टडी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड केस कंट्रोल स्टडी होता है फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज। द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट इज नोन एज कोहर्ट स्टडी एंड द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज इज नोन एज केस कंट्रोल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The study which proceed from effect to cause is known as, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा the study which proceed from effect to cause is known as case control study। ऑप्शन ए will be your correct answer। and the study which proceed from cause to effect is known as cohort study। next question. all of the following are advantages of case control study except odds ratio can be calculated, cost effective and inexpensive, relative risk can be calculated, useful in rare diseases। all the following are advantages of case control study except, इनमें से कौन सा केस कंट्रोल स्टडी का एडवांटेज नहीं है? तो केस कंट्रोल स्टडी यूजफुल होता है इन रेयर डिसीजेस, देन ऑड्स रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय केस कंट्रोल स्टडी, देन ये होती है इनएक्सपेंसिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिलेटिव रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। Next question. Indirect transmission includes which of the following? Inoculation into the skin,
वेक्टर बॉर्न, कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है वेक्टर बॉर्न. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड्स वेक्टर बॉर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन. The analytical study where population is the unit of study is cross-sectional, ecological, case control, cohort. The analytical study where population is the unit of study. तो population होता है unit of study in ecological study. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. The analytical study where population is the unit of study is ecological. Next question. Case control study is also called as रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, डिस्क्रिप्शन स्टडी, प्रीवैलेंस. तो क्या बोलते हैं केस कंट्रोल स्टडी को? तो ये होती है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. केस कंट्रोल स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ए डिसीज पास्ट एंड प्रेजेंट अप टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इज कॉल्ड एज इंसिडेंस, रिकरेंस, प्रीवैलेंस, कॉन्वेलेसेंस. क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ए डिसीज अप टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. तो क्या बोलते हैं इसे? क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ए डिसीज अप टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. तो इसे बोलते हैं प्रीवैलेंस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. प्रीवैलेंस होता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ए डिसीज अप टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सलीवन्स इंडेक्स रेफर्स टू disabled people in country, life expectancy after disability, life expectancy at birth, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी. तो क्या होता है सलीवन्स इंडेक्स? तो सलीवन्स इंडेक्स इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. सलीवन्स इंडेक्स रेफर्स टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.